Hello everyone, welcome to the class. Today is the second session of this chapter, Financial Statements of Sole Proprietor with Adjustments. Now today we are going to learn few more adjustments. The first adjustment for today is provision for doubtful debts. Provision for doubtful debts. Now let us first understand what do we mean by provision for doubtful debt and why do we create this provision and how this provision is created. Now see, following the prudence concept which says that anticipate all possible losses but never provide for probable gain. बेटा कोई डेटर्स कुछ डेटर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका डाउट है डाउटफुल है कि वो अपनी डेट को टाइमली क्लियर करेंगे या नहीं. तो ऐसा हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स. फाइन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स. सो what the business does, business क्या कहते हैं आपके accountants business में, they create provision for doubtful debts out of profits. Fine. So they just estimate कि let's say the debtors are, the total debtors of the business are of rupees 10,000 and out of 10,000 2,000 rupees it is doubtful. ये डाउटफुल है कि ये अमाउंट डेटर्स टाइमली वापस करेंगे या नहीं. So in such situation what we do, we create a provision for doubtful debt out of profits. अब बेटा जब हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे प्रॉफिट में से, so definitely the profit is going to get reduced. Fine. So we are going to pass the journal entry in the books of accounts for creation of provision. The entry for creation of provision for doubtful debts will be doubtful debts. It is created out of profit, so the entry is profit and loss account debited. बेटा क्योंकि प्रॉफिट कम होंगे तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. फाइन. अब बेटा जब भी प्रोविजन क्रिएट होगा तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्रिएट होता है और जब क्रिएट होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को शो करेंगे. अगेन आई विल रिकैप्चुलेट. बेटा जब भी हमें प्रोविजन क्रिएट करना है आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर डाउटफुल डेट, वी आर गोइंग टू create the provision out of profit and the entry which we are going to pass will be profit and loss account debited to provision for doubtful debt and we create provision following the prudence concept. अब बेटा जब बैड डेट हो जाता है और हमने ऑलरेडी प्रोविजन चार्ज किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, तो वी आर गोइंग टू चार्ज बैड डेट आउट ऑफ दिस प्रोविजन. तो जब बैड डेट होता है, ऑल ऑफ अस नो दैट बैड डेट इट्स अ लॉस. फाइन. जब बैड डेट होता है, सी लेट्स से we have created a provision of 5,000 and there was a bad debt of 2,000. Fine. There was a bad debt of 2,000. So second entry which we are going to pass of bad debt is bad debt account debited. All of us know that when bad debt occurs, the debtors get reduced. So bad debt it's a loss. Losses are to be debited. Bad debt account debited to debtor account and the amount is let's say 2,000 का लॉस हुआ बेटा. बैड डेट हमारे 2,000 के हुए. फाइन. अब ऑलरेडी मेरे पास प्रोविजन 5,000 का क्रिएटेड था, बैड डेट 2,000 के हो गए. So the last step is that we are going to charge this bad debt
from this provision. तो बेटा provision 5,000 का था, उससे हम ये bad debt को charge करेंगे. So the entry which we are going to pass for transferring this amount of bad debt or charging this bad debt against this provision will be, देखो provision create हुआ था, credit हुआ था, अब हम इसको use करेंगे, it will get reduced, so we will debit it. So provision for doubtful debt account, provision for doubtful debt account debited to bad debt जब arise हुए थे, they were debited in the books of account. Now, since we are charging them to the provision, so it is going to be credited. So, to bad debt account, amount is 2,000. I hope that the concept of creation of provision for doubtful debt is clear to everyone. Now, for the last time, again, I am recapitulating. When we create the provision out of profits, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं बेटा तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है. वी आर क्रिएटिंग द प्रोविजन आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट गेन विल गेट रिड्यूस. अब जो the items which reduce the profit are to be shown on the debit side of profit and loss account. That is why provision for doubtful debt is going to reduce the profit. That is why profit and loss account is being debited. The first entry for the creation of provision for doubtful debt is profit and loss account debited to provision for doubtful debt. Let's say provision was created for rupees 5,000. Second entry, bad debt occurred. That means out of the total debtors, 2,000 के debtors ऐसे थे जिन्होंने amount timely pay नहीं करी. They were declared as insolvent. So the bad debt is a loss. Losses are to be debited. Debtor reduce हो जाएंगे. Entry to be passed in the books of account is bad debt account debited to debtors account. अब बेटा जो हमने प्रोविजन क्रिएट किया था वो किया ही बैड डेट्स के लिए था. सो द लास्ट एंट्री इज दैट वी आर गोइंग टू चार्ज these bad debts against the provision. So bad debt account is credited in the last entry. Bad debt यहाँ डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया, and this amount is being charged against provision for doubtful debt. जब provision for doubtful debt create किया था तो क्रेडिट किया था, अब उसको यूज कर रहे हैं. क्यों यूज कर रहे हैं? For making up that loss, this bad debt which has occurred. So provision for doubtful debt is debited. So the final entry is provision for doubtful debt account debited to bad debt account. Now let's take up one example to understand that how we are going to give the effect of three adjustment entries, that is creation of provision for doubtful debt, creation of provision for discount on debtors, and then further bad debt. See, the example is like the extract of trial balance is given. There are three heads of accounts given. Debtors, debit balance, 4 lakh amount. Bad debts, bad debt is a loss, so debit balance 5,000 and provision for doubtful debt is 10,000. Now this provision is already being created out of the profits of the previous year. Now in additional information, it's given that we have to create a provision for doubtful debt on debtors at the rate of 5%. Create a provision for discount on debtors at the rate of 10%. ये क्या होता है? We'll discuss in a short while. And then further bad debt are of rupees 10,000. Fine. So see, अब ये जो ट्रायल बैलेंस में आइटम दी हुई है बेटा, इसका मतलब ये है कि इनका एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास हो चुकी है, लेजर अकाउंट्स में पोस्ट हो चुका है, and then finally we have got the balances over here in the trial balance. So debtors are always shown on the asset side of the balance sheet. So we'll write debtor on the asset side of the balance sheet 4 lakh. Fine, we'll write this in the inner column because there are certain adjustments that need to be made. Then bad debt, it's a loss.
ये ऑलरेडी बैड डेट हो चुके हैं, तो हम, ये लॉस है, लॉसेस आर टू बी ट्रांसफर्ड to your profit and loss account. So bad debts which are there in the trial balance, bad debts are shown on the debit side of profit and loss account 5,000, and then provision for doubtful debt is 5,000. Now since it's an old provision और हमें पता है कि provision का credit balance होता है, तो ये provision यूज नहीं हुआ तो हम इसको प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे, और ओल्ड प्रोविजन को जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो करेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, for doubtful debts. And please remember, this is the provision which is given in the trial balance. This is the old provision. Since we have not used this provision in the current financial year, इतना बचा रह गया, तो इसलिए हमने इसको प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया. इस ओल्ड प्रोविजन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करते हैं. ट्रायल बैलेंस की जितनी आइटम होती हैं उनका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बार ही शो होता है. एडजस्टमेंट एंट्रीज जो गिवन है उनका इफेक्ट दो जगह पे शो होगा. अब ये एडजस्टमेंट एंट्री बेटा किसी भी सीक्वेंस में दी हो, सबसे पहले जो हम कंसिडर करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर द एंट्री ऑफ फर्दर बैड डेट फर्स्ट, क्योंकि बैड डेट वो अमाउंट है कि वो आपकी रिकवर नहीं होगी, दैट इज इररिकवरेबल. सो वी हैव डिस्कस्ड इन दिस एंट्री इन द लास्ट क्लास. जब भी फर्दर बैड डेट होते हैं, entry will be bad debt to debtor account. Further bad debt will be added. Further bad debt will be added in the bad debt account on the debit side of profit and loss account, and 10,000 is added over here. And since this amount is irrecoverable now because it's a bad debt, so we are going to subtract further bad debt from the debtor. तो बेटा जब मैंने फर्दर बैड डेट 10,000 डेटर से सब्ट्रैक्ट किए तो मेरे पास डेटर की अमाउंट आ गई 3,90,000. अब 3,90,000 में बेटा देर आर सर्टेन डेटर्स, 5% ऑफ द डेटर्स जो कि डाउटफुल है कि they are not going to give us back the amount. So that is why the second adjustment will be, though it's a first adjustment given, but we are going to treat it on the as a second item, second adjustment. Create a provision for doubtful debt on debtor at the rate of 5% per annum. क्योंकि बेटा जो 10,000 के एडिशनल बैड डेट हुए थे, ये अमाउंट तो इररिकवरेबल है, ये तो आ ही नहीं सकती, ये बैड डेट हो गई है. तो 10,000 को 4 लाख में से रिमूव करके जो हमारे डेटर्स बचे वो हुए 3,90,000 के. अब 3,90,000 पे we are going to create a provision of 5%. So 5% of 3,90,000 will be, it is 19,500. So 5% अगर हम create करते हैं 3,19,000 का, so this is the new provision that need to be created. It is 19,500. So what is the treatment? अभी हमने देखा था इसकी एंट्री. जब भी प्रोविजन क्रिएट होता है वो that provision is to be shown on the debit side of profit and loss account. तो there are two ways. या तो हम बैड डेट के अंदर ही प्रोविजन को ऐड करके दिखा दें, या हम अलग से भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट we can create and show it on the debit side of profit and loss account. So I am adding this new provision. This is your new provision for doubtful debt. I am adding this new provision for doubtful debt 19,500 in the amount, with the amount of bad debt, and subtract this new provision for doubtful debt. New provision for doubtful debt is subtracted from 19,500, is subtracted from the amount of the debtor. Fine. So
doubtful debt. So the net amount of debtor now to be shown in the books of account is, we'll subtract 19,500 and we'll get 3,70,500 debtors. And if we add this, we are going to get a figure of 34,500. So up till now, we have given the effect of two adjustment entry. First was further bad debt of 10,000. Second was create a provision for doubtful debt on debtors at the rate of 5% per annum. तो बेटा दोनों का ही क्या ट्रीटमेंट था? हमने फर्दर बैड डेट और न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों ही हमने ऐड किए हैं बैड डेट के अंदर डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दोनों को ही हमने डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट किया है. अब बेटा न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट मेरे पास आई, दैट इज द अमाउंट ऑफ डेटर्स which is now 100% sure that they are going to give us the amount back on time. ये डेटर्स वो डेटर्स हैं बेटा जो हमें टाइमली पेमेंट करेंगे. अब अगर वो हमें टाइमली पेमेंट करेंगे तो हमें टाइमली पेमेंट रिसीव करने पे उन्हें डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा. मुझे पता है कि ये एक्सपेंस होने वाला है. आई हैव टू गिव द डिस्काउंट टू द डेटर्स फॉर टाइमली पेमेंट. सो व्हाट आई विल डू इज I will now give the effect of this adjustment, create a provision for discount on debtor at the rate of 10%. 100% श्योर है कि 3,70,500 के डेटर्स टाइमली पेमेंट करेंगे तो इनको 10% डिस्काउंट हमें ऑफर करना होगा. तो इफ वी कैलकुलेट 10% ऑफ 3,70,000, if we calculate 10% of 3,70,500, this amount will be 37,050. So 37,050 का बेटा हमारा प्रोविजन क्रिएट होगा for giving discount on debtors. So the effect of this entry will be, we'll show the effect of this entry in the financial statements as, since again provision is to be created, this provision for discount on debtor is to be shown on the debit side of profit and loss account. So we'll write to provision for discount on debtors. Discount on debtors, the amount is 37,050, and we will subtract this amount, provision for discount on debtors, from the amount of debtors finally, less 37,050, and will show the net figure of debtors in the amount column. Again, I'll repeat myself. We'll create the provision for discount on debtors on the amount which we are going to get by subtracting further bad debt and new provision for doubtful debt from the debtors. That amount was 3,70,500. बेटा इसका 10% हमने कैलकुलेट किया, 37,050 आया. Again, treatment will be the same. 37,050 को हम डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. रीजन क्या है कि ये प्रोविजन है. प्रोविजन जब भी क्रिएट होगा तो प्रॉफिट रिड्यूस होगा. प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो वी आर गोइंग टू शो इट ऑन दी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड same effect we will subtract 37,050 from 3,70,500 and we'll show the net figure in the amount column of the balance sheet. I hope that the treatment of all the three adjustments is clear to everyone.
Now finally I am recapitulating. अब देखिए बेटा 3 एडजस्टमेंट है, तीनों एडजस्टमेंट का सेम ट्रीटमेंट है. That in all the 3 adjustments, further bad debt, new provision for doubtful debt and provision for discount on debtors are to be shown on the debit side of profit and loss account, and every item, further bad debt, new provision for doubtful debt and provision for discount on debtors, are to be subtracted from the amount of debtors, and the final amount to be shown in the balance sheet on the asset side. So the final amount is, after deducting provision for discount on debtors of rupees 37,050 from 3,70,500, the net figure of debtors to be shown in the amount column of the balance sheet on the asset side is 3,33,450. I hope all of you have enjoyed the learning today and understood the concept very well. That's all for today from my side. Thank you very much.